Here, the tiger is not just an animal, he's a presence, a legend with stripes. And in this forest, he is nothing lesser than God. They say the tiger sees you 1,000,000 times before you spot it. Tigers are apex predators who are the masters of stealth. Every broken branch, every half-eaten kill, every distant call is a signature, a message that the tiger was here. Many tigers have ruled this land. Tigers which have left their claw marks not just on trees, but have left their marks in history. Now the tiger no longer hides. He walks like a shadow turned real. He drinks from his lake. He protects his land. And he hunts to survive. And you know, somewhere in those tall grass, in the bamboo shadows, two golden eyes locking onto you. You feel it even before you see it. That chill up your spine. Yes, that's him. The king of the jungle. As Call of the Jungle continues its pursuit of exploring Indian wilderness, we embarked a journey to notably Maharashtra's oldest and largest national parks, the Tadoba National Park. We were due to travel to Nagpur on the wee hours of a Thursday morning. But as they say, life always takes an unexpected turn. And this was true for our friend Sayandip, who missed his inward flight to Nagpur. And when you are in Nagpur, how can you forget or miss the famous Ramji Shamji Pohe Wale? This delicious breakfast at Ramji Shamji's Pohe Wale gets Call of the Jungle's certified and approved badging. Upon reaching Tadoba Lakeview Resort, we quickly rushed in to our air-conditioned deluxe rooms, where we took a long slumber before completing a yummy lunch. Post our lunch, we headed out to our first safari. Day 1. All our safaris were planned in the buffer areas due to the absence of permits for the core zones. The Tadoba Andhari Tiger Reserve was created in 1955. The reserve includes Tadoba National Park and the Andhari Wildlife Sanctuary. The reserve consists of 577.96 square kilometers of reserve forest and 32.51 square kilometers of protected forest. To the southwest is a 300-acre Tadoba Lake, which acts as a buffer between the park's forest and an extensive farmland. The lake is perennial water source which offers a good habitat for the mugger crocodiles to thrive. Other wetland areas within the reserve include the Kolsa Lake and the Andhari River. The Tadoba Reserve covers the Chemur Hill and the Andhari Sanctuary covers the Moharli and the Kolsa ranges. The nearest village from this place is Durgapur. Our first game drive was at the Devada Adegaon zone. This zone is popular for its sighting of Choti Madhu and Shambhu. Traversing through the thickets of Devada zone, we experienced the terrain of this area. We were trying really hard to track the famous Choti Madhu with her 3 cubs. The litter is believed to be fathered by Shambhu, a dominant male known for his muscular build. We received some information from our fellow guides that the cubs were spotted close to a waterhole called the Kalapani. We drove back and forth Kalapani, determined to track them down. Our efforts finally paid off as we drove past a grassland close to the waterhole to spot one curious cub
who stuck his neck out of the grass. Soon enough, we could spot two siblings lying at a distance from the bull cub. This moment was a bliss to the entire group as we were successful in tracking 3 tigers in our first safari. We spent half hour close to the cubs in the grassland, watching them calmly resting, beating the summer heat. As the sunset was fast approaching, we decided to take another shot at tracking down Choti Madhu. As we were driving along the track, we heard the famous lines, "Tiger, tiger, tiger." And there was Choti Madhu walking right ahead of us. With the hope to see Choti Madhu alongside our cubs, we ended day 1 on a very positive note. With happy faces, renewed hope of day 2 being better than day 1. Day 2. Our dear friend Sayandeep missed the action of the first game drive. We were glad that he could join us for the remainder of the safari after making alternative travel arrangements. The focus on day 2 at the Devada zone was to continue our efforts in tracking Choti Madhu and cubs. इसमें से खाली 20% जंगल ओपन है सफारी के लिए, 75% पूरा बाम्बू ही भरा हुआ है। ये आंधी तालाब है, इसको पूरा लग के ईरे डैम है। ईरे डैम का पानी जो पावर स्टेशन जो है थर्मस पावर, वो चंद्रपुर के लिए पीने के लिए भी जाता है, वो थर्मस पावर के लिए भी। टोटल कितना टाइगर्स है? 95 टाइगर्स है। इसमें से खाली अपनी तरफ दिखने वाले 3 या 4 फीमेल है, 2 या 3 मेल है, 2 फीमेल को कफ है। और बाकी कॉमन एनिमल्स तो सुबह मॉर्निंग या शाम को 5 के बाद ही, यानी धूप में तो दिखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे धूप निकलती है तो टाइगर भी घूमना, उसकी मूवमेंट भी बहुत कम रहती है। जैसे जैसे शाम होती है वैसे वॉकिंग के लिए निकलता है, टेरिटरी मार्किंग के लिए। टूरिज्म जोन में कितना टाइगर्स है? टूरिज्म जोन में अपने तो 7 टाइगर्स है। 7 टाइगर्स, 2 फीमेल को 3 कप है। As we swept across different areas of the jungle, we were left with disappointment as there was no pug marks that pointed towards the direction where they went. We moved to a famous waterhole in the area and we were very glad to hear the alarms of a Samba deer. As we set course in the direction of the Samba alarm calls, we were happy to see our first male tiger at Tadoba. He goes by the name Shambhu. To know more about Shambhu, we need to understand the history of Tadoba. A section of Moharli buffer was occupied by Taru, a tiger with a huge build and strength. Shambhu entered Taru's territory, defeating him and claiming both Taru's territory and Choti Madhu. Shambhu's lineage hasn't been confirmed, but it's believed that he came from Kolsa zone. Due to his massive size and strength, many believe he's been sired by Wagdo or Bajrang, the 2 legendary tigers of Tadoba. It was mighty pleasing to see the size and the huge build of Shambhu. This clearly tells us why he is the most dominant tiger. While we were unsuccessful in tracking down Choti Madhu and cubs during our second safari, we were mighty pleased to have spent time with Shambhu. Name of the tiger, sir? Shambhu. He's got a very unique face. Bulky face, square, it looks square. And his markings are also very unique. Oh, that's right. I'll show you the picture of Shambhu. जंगल जो है बना, मतलब ये पहले WCL जो है माइंस वाले लेने के लिए आए थे, जंगल और गांव सब हमारा। तो ये उनको माइंस वालों को ना देते हुए ये जंगल डिपार्टमेंट को दिया, और डिपार्टमेंट ने ये बफर जोन ओपन किया 2010-11 में। हाँ, और यहाँ के सब जो लोकल लोग हैं उनको काम दिए, फिर यहाँ पे गाइड, ड्राइवर और जिप्सी खरीदने के लिए पैसे भी दिए।
और कुछ लोगों को होम स्टे बनाने के लिए पैसे दिए। तो सब लोग अभी ये जंगल में इन्वॉल्व हो गए, जितने भी गांव के लोग हैं कहीं ना कहीं। जंगल की संरक्षा, कंजर्वेशन उसके लिए हाँ, अगर ये जंगल जो है वो माइंस के लिए दे देते तो अभी हम लोग कहीं और होते, यहाँ पे नहीं होते। जंगल 2010 10-11 में हुआ। इसकी माइंस के लिए हुआ था। कोलसा क्या माइंस? कोलसा कौन सा माइनिंग? कोलसा। हाँ, चंद्रपुर सिटी ब्लैक गोल्ड के नाम से पहचाने जाते हैं ना। और यहाँ का गवर्नमेंट एक ये भी बनाया ना, संगठन बनाया ना, जो हाँ। भी यहाँ काम करते हैं। हाँ, ये महुआ का और बैम्बू का जो भी बनाते हैं ना कारीगर, हाँ। वो बेचते हैं ना महाराष्ट्र। हाँ, ये तो अभी लाइफ ख़त्म हो गया इसलिए ये पेपर मिल में दे रहे हैं। नहीं तो पहले जो गांव वाले या बाम्बू के कुछ जो चीज़ें बनते बाम्बू से, बेड फर्नीचर जो भी है, तो वो बना के बेचते थे। अच्छी बात है, गवर्नमेंट कुछ तो कर रहा है। हाँ, लोगों को भी मदद मिल रहा है। और ये काटने के लिए भी गांव वाले ही आते हैं, तो वहाँ से भी उनको पैसा मिलता है। अच्छी बात है। जंगल से बहुत कुछ मिलता है गांव वालों को, जैसे तेंदू पत्ता हो गया, उससे भी इनकम आता है। ये महुआ फ्लावर, सब चीज़ों से इनकम मिलता है गांव वालों को। बट ज़्यादा इनकम यहाँ से जो जाता है वो पेपर मिल का है। हाँ, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड पेपर मिल। गवर्नमेंट को ही मिलता है। पहले तो जंगल देते थे उनको, पेपर मिल वालों को, और वो खुद काटते थे। तो अभी डिपार्टमेंट खुद काट रहे हैं और उनको बेच रहे हैं। लीज पे देते थे पहले 2 साल 3 वो साल। गाँव वालों को वाइल्ड एनिमल्स अटैक नहीं करता? करता है ना, करता। हाँ। मैनीटर्स मैनीटर्स बहुत कम है वैसे। मैनीटर नहीं है तो ऐसे बोलेंगे तो भी चलेगा। कैसा है, मैन ईट कब होता है, जब गांव वाले महुआ फ्लावर उठाने के लिए वगैरह जाते हैं ना, तो एक जगह पे बैठे रहते हैं, कुछ मूवमेंट नहीं होता। तो टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, उनको लगता है कुछ एनिमल्स है, इसलिए वो अटैक होता है। अगर आप खड़े हो, चलते फिरते रहते हो, तो अटैक नहीं होगा उसमें। सो वो समझता है डियर है। हाँ, क्योंकि डियर उसको है क्या दिखता है शैडो में। हाँ, बट अभी कैटल किल के लिए भी बहुत पैसा दे रहा है ना गवर्नमेंट, इमीडिएट कॉम्पनसेशन दे रहा है। कंपनसेशन सभी चीज़ों के लिए मिलता है यहाँ पे। कैटल किल हो गया। कैटल किल के लिए कितना देता है गवर्नमेंट लगभग? अभी जो हम लोग फॉर्म भर के देते हैं ना, उसमें अगर हम लोग कुछ डालेंगे, उनका रेट 1 लाख डाल दिया तो उसमें 70-80 हज़ार रुपये मिल जाता है। ओके, जो रेट है उनके हिसाब से देते हैं वो लोग। Our afternoon safari on day 2 was booked in the Agarzari zone. Since Agarzari was inhabited by human settlements before being declared a buffer zone, it has vast grasslands scattered with ponds and lakes. In winter, many migratory birds are often seen near the lake until autumn arrives. टाइगर्स भी बहुत गाय वाय मारते हैं जी। तो उससे गांव वालों को तकलीफ होता है। गवर्नमेंट कुछ कर रही है? गवर्नमेंट कैसे कैटल वगैरह मारे तो गवर्नमेंट उनका जो मुनाफा होता है वो देता है कैटल को। तो ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो बोलते हैं ना, टाइगर और हमारे गांव इंसानों वालों के बीच में बहुत ये होता है ना, तनाव होता है। हाँ, अभी वो कम हो गया है। गवर्नमेंट अगर कॉम्पनसेशन दे रही है तो थोड़ा कम हो गया है तनाव। जी, तनाव वगैरह अभी काफ़ी कम हो गया। और यहाँ के जो विलेज वगैरह है जो मोस्टली एनिमल्स के पीछे नहीं लगते, क्योंकि एनिमल्स के उनका काम वो उनको करने दो, और विलेज का काम क्या है, उनके ऊपर उनका रोजी रोटी चलता है। तो एनिमल्स की जितनी प्रोटेक्ट करते हैं, बस वो जो बाहर से जो हंटिंग करने के लिए लोग आते हैं तो उनको भी पकड़ा देते हैं विलेज वाले यहाँ पे। सो पोचिंग के लिए बहुत पेट्रोलिंग करते हैं आजकल। जी, पोचिंग के लिए फॉरेस्ट वाले भी पेट्रोलिंग करते हैं, विलेज के भी 2-3 साथ में रहते हैं उनके। हाँ, और मैंने ये भी देखा फायर के लिए, फायर प्रोटेक्टर्स के लिए फायर वॉचर्स विलेज वाले ही विलेज होते वाले। हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से पूरे विलेज वाले ही फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं। फिर जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑफिसर होते हैं वो सिर्फ बाहर से होते हैं, बाकी सब विलेज वाले ही प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेस्ट। We received a tip-off
from the forest guards that Choti Madhu and cubs had crossed over from Devada to Agarzari in the wee hours of the morning. This uplifted our spirits to continue our pursuit of the tiger family. We drove past a waterhole. We heard some spotted deer alarm calls. To investigate this further, we moved towards one of the lakes just to find Choti Madhu resting in the shade with two of her cubs. We patiently waited for hours to get a glimpse of them at the waterhole. Our efforts paid off as we saw Choti Madhu along with her cubs near the lake. Tigers frequently sit in waterholes during summers to cool down and enjoy a refreshing dip. They also use the waterholes as hunting grounds as they can stealthily approach the prey that come to quench their thirst. This was the highlight of the tour as we spent close to 2 hours with the tiger family. While we were satisfied with the amazing sightings we had experienced so far, we continue to track for more tigers. Day 3. Our morning safari on day 3 was booked at the Devada Adegaon zone. We were certainly not disappointed as we had yet another incredible sighting of the mighty Shambhu in deep slumber. We also took the time during this expedition to experience the jungle beyond tigers and reflect on the memories we could make during this expedition. As they say, Tadoba never disappoints. We carry this positive vibe this experience has enriched us with.